Welcome to Explore with Abeera and welcome to another video. Today's video is literally very special for me because मैं पहली बार किसी celebrity look का करने वाली हूँ recreate. तो today we are going to create the look of Alia Bhatt from Rocky रानी की प्रेम कहानी. उसमें जो उसका song था तुम क्या मिले, हम उसका look recreate करेंगे. So for that we're gonna start off with the makeup and all. But before starting the videos, कुछ tips हैं, कुछ चीज़ें हैं जो I want to clear it out. I'm not someone जो कि proper makeup करती है. Like I don't use foundation, I don't use concealer. I just use minimum makeup और मैं उस minimum makeup से ही जो looks create कर सकती हूँ अपने लिए. I do that and I really wanted to share that with you guys कि there are a lot of girls here like college going लड़कियाँ, school going लड़कियाँ या फिर someone who is like me who don't use foundation and concealer या उनको भी मेरी skin की तरफ सूट ही नहीं करता है ये सब कुछ. तो I really wanted to make a video for them. तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है. I am going to create आलिया भट्ट का तुम क्या मिले look with the most minimum makeup. और वैसे भी मैंने उसका vlog देखा था. She just told by herself कि उसमें no makeup look हुआ था. But obviously they use foundation and concealer. But हम वो use नहीं करेंगे. तो I'm gonna show you कि affordable and minimum makeup के साथ आप वो look कैसे create कर सकते हैं. So let's just start the video and I'm really excited for this one. I hope you like it. But before starting the video, you know the drill. Do not forget to like, share and subscribe. Let's go! Okay, so I am all set to start the look. First, we're gonna start off with a moisturizer. अब आप कोई भी moisturizer use कर सकते हो which is suitable for your skin. मैं Pond's का super light gel moisturizer use कर रही हूँ. And if you want me to make a different review video इस moisturizer पे, so do let me know. I will make a separate review video इसकी because this is literally becoming my most favorite skincare product. So let's just start off with this. और ये हम like because ये बहुत light होता है, super light, तो you just have to use minimum. इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता. Super nice and cool. Okay, we're done with the moisturizer. Can you see the shine on my face? I really like this one. ये बहुत अच्छा moisturizer है. Okay, step number 2, I am going to use this Glow and Lovely की Hydra Glow Cream. Again, I said कि मैं foundation या concealer use नहीं करती हूँ. तो foundation की जगह मैं ये use करने वाली हूँ. I know you guys will be like, okay, how can we create a look with this? But trust the process, guys. Again, आप अपने skin tone के लिहाज से देखोगे कि आपको कितनी लगानी है. I am using according to that. और अगर आपको लगता है that any other cream suits you more rather than foundation or this cream, just go for that. I'm just gonna apply a little bit onto my neck. गिर जाती ना अभी. तुम क्या मिले. By the way, do let me know in the comment box कि आप लोगों को रॉकी रानी की प्रेम कहानी मूवी लगी कैसी है actually. I really want to know सबके reviews. Okay, we're done with our foundation aka cream क्योंकि हमने foundation नहीं use किया है. Now step number 2 is going to be powder. Not losing powder, but I'm gonna use this Pond's का संदल powder. मैं यही use करती हूँ. I don't use losing powder. Again, मेरी skin को नहीं suit करता. I have really baby skin. और I don't even like putting up इतना सब कुछ. मुझे ऐसा लगता है मेरा face बहुत dry हो जाता है, बहुत cakey हो जाता है उससे. तो I'm gonna use this. I'm gonna apply it with a blender. Squishy. And a different blender for my under eyes. Okay, I'm gonna take this much.
ओके, एज आई एम डन, मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से पूरे फेस पे लगा लिया पाउडर. अब मैं अंडर आईज में लगाऊंगी कंसीलर की जगह द सेम पाउडर विद द स्मॉल ब्लेंडर. एंड फॉर कंटूरिंग एज वेल, क्योंकि हमें कोई हार्श कंटूरिंग वैसे भी नहीं करनी है इसके लिए. How do you like this? Very funny, but baking process. Okay, the next step is going to be blush. तो क्योंकि उसने ब्लश भी बहुत लाइट मिनिमम रखा था, we're gonna use that. And we're gonna move in with blush. यार मैं ये नहीं बता रही कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास जो भी अवेलेबल है आई एम जस्ट यूजिंग दैट बिकॉज आई एम नॉट अ बिग मेकअप बाइंग फैन. तो जो भी अवेलेबल हो ना, जस्ट यूज दैट वन. यू डोंट हैव टू बाय एनी एक्सपेंसिव मेकअप प्रोडक्ट्स फॉर दिस. आई एम गोना यूज अ लाइट पिंक शेड, हल्का हल्का. सी जस्ट दिस मच. और फिर आप सेम अपनी नोज पे कर लें थोड़ा सा. ओके, दिस इज इट. अब हम आ जाते हैं आईज पर. फॉर आईज we're gonna use the same blush, क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है. we're gonna use the same pinkish blush. इसी को थोड़ा सा लेकर, ओके यस, थोड़ा सा. we're just gonna use a little bit over here. See? अब आप इसको थोड़ा सा स्मच कर लें so that it looks more natural. Okay, that is it. This is it for eyeshadow. Now we're gonna move in for lashes. और हम lash पहले curl कर लेंगे. I really need a mirror for that. Plus मैंने इतने memes देखे हैं कि लोग lashes curl करते हैं और उनकी lashes literally निकल जाती हैं. Has that ever happened to you? Like any one of you? मेरे साथ बीच में मैं कोई बुरा lash curler यूज़ करना शुरू कर दिया था मैंने. उसमें हो रहा था मेरे साथ. See the difference? Okay, I'm done with curling my lashes. अब I'm gonna move in with the step mascara. Mascara हम बिल्कुल लाइट रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे. बट एक सेकेंड, मस्कारा लगाने से पहले वी हैव टू ब्लेंड दिस. क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा एक्सपीरियंस किया, नीचे वाली लैशेस से पहले अगर आप ब्लेंड ना करो ना, तो जब आप ब्लेंड कर रहे होते हो तो लैशेस बहुत इधर उधर हो जाती हैं. Okay, blend. Now we're gonna move in with mascara. I am using this magic mascara which is by Color Institute. मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है because it gives काफ़ी natural look. Plus it is not that expensive. It was pretty reasonable. मैंने काफ़ी पहले लिया था. I don't remember exact price. मेरे ख्याल से 300 या 400 का था. We're gonna apply a little. बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है. Because again, it's no makeup look.
Okay, that's it. Now we're gonna move on for the lip color. एंड फॉर लिप कलर व्हाट वी गोना डू इज़ हम दो कलर्स को मिक्स करेंगे. एक ही मेरे पास मेबेलिन का सुपर मैट इंक है हेरोइन 25. ये मैं लिटरली हर वक्त यूज़ करती हूँ, बट इसका जो शेड है दैट इज़ स्लाइटली ऑरेंजिश पिंकिश. इसको यूज़ करने की एक ट्रिक है. जस्ट 1 2 3 4 1 2 3 4 just apply few dots and then smudge. The best part is that it is kiss proof, it is waterproof, और इसको जब तक सही से उतार ना दो ना ये नहीं उतरती. तो I really like this. और इसके ऊपर हम टैप इन करेंगे दिस हुदा ब्यूटी की मैट लिपस्टिक विच इज़ मैट न्यूड. इसको हम हल्का सा टैप इन करेंगे. And we are done with our minimal makeup look. अब हम इसको finalize करते हैं थोड़ा सा. We're gonna move in with some jhumkas. And we need a transformation. Ta-da! No, I'm not wearing a sari. मैंने दुपट्टे का ऐसा ड्रैप कर लिया है because I'm not allowed to wear a sari जब तक शादी नहीं हो जाती. Anyway, this is our final complete look. I hope that you like it. And I know कि उसने कुछ जगह पे नोजपिन भी पहनी है, बट मैं वो पहनूंगी दूसरे लुक में. I didn't thought कि मुझे इसमें पहनना चाहिए. It will be very similar. So yes, this is it. Let me give you a close up. Okay everyone, this is it for today's video. If you like it, do not forget to like, share and subscribe. I will see you in the next video. And if there's any other look that you want me to create, I would love to do it. So do comment below कि मुझे और कौन से looks create करने चाहिए. And what else do you guys want me to do? What do you want me to improvise? Because I'm like very new in this. मैं अपना makeup कर लेती हूँ, but I've never made such long tutorials या फिर किसी का look उठा के कभी कुछ करना. I used to do it on my own only. I hope that this was helpful for you, especially उनके लिए जिनको बहुत ज़्यादा मेकअप करने की आदत नहीं है. So this is it for today's video. I will see you in my next video. Till then, take care of yourself. Bye bye.